the problem with Indian educational YouTubers? Now, I'm curious about this. भारत के इंफोटेनमेंट यूट्यूबर्स के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस वीडियो में मैं आर्ग्यू करूंगा कि क्यों हमें पहली बात एजुकेशनल यूट्यूबर्स को देखना थोड़ा कम कर देना चाहिए, और दूसरी बात क्यों हमें बहुत इंटेंशनली ये सिलेक्ट करना चाहिए कि हम किन एजुकेशनल यूट्यूबर्स को देख रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ मैं अपनी बात को रखने Okay, I can kind of understand what he's getting at, because some people will just do information for information's sake. Some people will just parrot what someone else has said. That's basically what it becomes. They parrot what someone else says, and then you have a bunch of copy-paste videos. And sometimes misinformation gets mixed into it. But you when it comes to curating, it's difficult. My wife is holding our son right now. She doesn't want to be on, even though I invited her. She's like, no. So whatever. कोशिश करूंगा। हो सकता है आप हर बात से सहमत ना हो, पर मुझे लगता है इस पर एटलीस्ट डिस्कशन तो होना ही चाहिए। शुरू करते हैं। कृपया ध्यान दीजिए। सबसे मैं कहूँगा बिगेस्ट ग्राइप मेरी यही है कि कोई भी यूट्यूबर लिटरली किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना रहा है। एक दिन एक Okay. Well, I guess at this point I'm more of a reactionary YouTuber. I take in the information that is displayed, but when it comes to like educational, normally you want someone who's like my wife could do an amazing educational when it comes to like chemistry, since she's got the master's degree in it, but she just prefers to do art. So subscribe to her channel. She enjoys doing art videos. But honestly, it makes a lot of sense where you specialize on one thing. I'm guessing his issue is like these people don't really specialize. व्यक्ति स्टॉक मार्केट पर वीडियो बना रहा है, दूसरे दिन चाइना के मिलिट्री ऑपरेशंस पे, और अगले दिन इंडिया की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स पर। ऑब्वियसली ये लोग इन सब्जेक्ट्स पर एक्सपर्ट तो है नहीं, और एक्चुअली होने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रेगुलरली किसी टॉपिक के बारे में पढ़ता है, उसका इंटरेस्ट है, बेसिकली वो उस टॉपिक पर एजुकेटेड है, तो वो क्रिएटर भी अच्छे और इंसाइटफुल वीडियोस बना सकता है। पर आप सोच करके देखिए, क्या हमारे एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर्स हर टॉपिक पर इतने एजुकेटेड और वेल So the issue is there are people who are more passionate about a topic who don't understand the topic, but because they're passionate about it, they'll make a video on it. And then there are those who are educated but don't seem to know how to make an actual educated video or an enjoyable video. कि वो एकदम ही अलग अलग फील्ड के बहुत कॉम्प्लेक्स Every week हर हफ्ते एक वीडियो बना सके। मैं कहूँगा नहीं। और अगर उनकी रिसर्च टीम को भी ऐड कर दो, तो भी जिस लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, जिस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात कर रहे हैं, वो अचीव नहीं हो पा रही है। इस बात के कई एग्जाम्पल्स हैं। हाल ही में मेरे सामने मोहक मंगल का ये वीडियो आया। अब मुझे न्यूट्रिशन में इंटरेस्ट है, तो मैंने उसे देखा और उसमें उन्होंने ये बोला। पहली चीज है कि मीट में सारे जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो उनमें प्रेजेंट होते हैं। Why is he talking about amino acids? I have seen a few of his videos. Why the heck is he talking about amino acids? Okay, I understand the issue here. You follow someone. See, you guys follow me because I'm an idiot and I watch random stuff here and there. But I get it. You follow someone because you want to get insightful. You want to learn about like what's going on in the world. You follow specific people. Either they do cinema kind of breakdowns, like they'll be like a film snob, a cinephile, or there's like geopolitical people. You'll follow them for that. But you have follow someone for geopolitical information, and then they give you a health video. What? Makes no sense. जबकि कई वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज में लाइसिन्स जैसे जरूरी अमीनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। इस गलती का लेवल बहुत ही ज्यादा बेसिक है। सच ये है कि हर प्लांट में सारे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होते हैं हर एक पौधे में, बस वो थोड़ी कम ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो स्क्रीन पे रेड क्रॉस दिखाना और ये बोलना कि वो मिसिंग है, ये काफी बेसिक लेवल की गलती है। Do you understand what that is? Yeah? You know the chemical and everything? It's an essential? Okay. My wife says it's an essential chemical that needs to be in your body apparently, but who cares? Who cares? इस एग्जाम्पल की मैंने पहले भी बात की है,
और वो बात मैंने की थी अपने उस वीडियो में जिसमें मैं गौरव ठाकुर के वेज और नॉन वेज वाले वीडियो पर रिस्पॉन्ड कर रहा था ना। मुझे नहीं लगता कि मुझे आउट एंड आउट न्यूट्रिशन पर वीडियोस बनाना चाहिए। Majority of Indian infotainment people on YouTube are propagandists. Well, that's believable. That's believable. A lot of people like to push their narrative. Like that's why I always I like to say like no matter what, you always take everything with a grain of salt. Or no two people will be alike in the world. No two people will be alike in the world. That's why you want to find people that you can have disagreements with, but at the same time you want to look everywhere. You want to look everywhere. You want to follow different perspectives. You want to so that way you don't get completely shoehorned into one. And you want to follow someone that you completely don't agree with. Well, that's not crazy. That's not crazy. I mean, that's like here in the U.S. if you follow like Hassan Piker, you're lost. However, if you follow like Ethan Klein, he's completely against everything like I would be for, but he's more level-headed, believes that people should have different points of view, which is perfectly commendable. Perfectly commendable. But like the Hassan Fikers or the Nick Fuentes, they're on the complete opposite spectrum where they're like just hate anyone that doesn't think the same way they do. जाके कॉम्प्लेक्स स्टडीज को पढ़ना, उसमें घुसना, उसके मतलब निकालना और लोगों को कंक्लूजन्स देना, मुझे नहीं लगता वो मेरा काम है। आई डोंट हैव दैट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। लेकिन गौरव ठाकुर का वो वीडियो बहुत ही हेस्टी जनरलाइजेशन से भरा हुआ था, तो ना केवल मुझे उस पर एक रिस्पॉन्स वीडियो बनाना पड़ा, बल्कि अपने रिस्पॉन्स वीडियो में मुझे ये तक बोलना पड़ गया। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उनकी खुद की दिखाई जा रही स्टडी ये बोल रही है। पढ़ तो लो यार उसको एक बार। इसी तरह आप देखोगे तो ध्रुव राठी ने रिलीजन पर वीडियोस बनाए हैं जिस पे 18 मिलियन व्यूज हैं। बेसिकली ये Yeah, it's so funny because I've had people like argue with me about religion and or like the Bible, and it's obvious that they've never know anything or they saw it in someone's video. And it's like, I'm not an apologist. I'm not going to argue, but you clearly haven't read it yourself. It's like, this is the thing. Like, I always tell people, it's just like, you have to look it up. You have to open the book. You have to read it for yourself. Because if you don't, then you have no real argument or no real conviction for yourself. Like, I have the Quran right behind me. I have a Bible right behind me. I need to read the one you brought. I have to. Yeah. Because it's just great to have more information. And yes, you will never completely agree eye to eye with anything, but it's always good to just get other perspectives. So that way you don't completely believe anything that's like randomly put in front of you. You can be like, well, I get what he's getting at, but it's not entirely true. Yeah. It's always, religion is always accompanied with views. Yeah. Yeah. Always. एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि देखो मूर्ति पूजा इतना भी कोई बड़ा हराम नहीं है इस्लाम में, पर idol worship isn't a big sin. Yeah. It is depending on the religion. It absolutely is. इस बात से खुद इस्लामिक स्कॉलर्स ही सहमत नहीं है। ये हरकत इसने नहीं इस पूरी वीडियो में की, इसके ऊपर मैं ऐसे सलूट करता हूँ। ये इंतहाई जलील हरकत है, झूठ बांधना है मुसलमानों के ऊपर। मुसलमान किसी किस्म की भी बुत परस्ती को जायज नहीं समझता है। लेकिन आप उस वीडियो को अगर देख, Yeah, that's the thing. It's just like I could easily debunk that, being like, hey, there's just one line. Thou shalt not have any other gods before me. And that includes like idol worship. They melted the gold calf down because people were wanting to worship that when Abraham went up on the mountain. Moses. Whatever. But it's just like ridiculous. It's ridiculous that people will start to make claims to try and push their own narrative, to try and make people feel like it's not bad when it absolutely is. That's why I walk into a Catholic church, I get uncomfortable because they have a whole bunch of like idols placed around, and what I'm used to is just like a cross sitting somewhere. It's like just a cross. That's the biggest. But then they have like Jesus Christ or the Mother Mary or then all these saints, and it gets weird. It gets weird. देखोगे तो आपको एक सेकंड को लगेगा कि जैसे ध्रुव खुद एक स्कॉलर हैं, उस टॉपिक की भयानक कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करते हुए 26 मिनट में He's just a puppet. Don't take him seriously. Well, that's believable. But then again, I don't think it's just him being a puppet. I think it's the fact that he just wants to hey, I've seen a video of his. I don't know. I don't know how to explain it. I mean, because I guess I could say like it's kind of like the Sandman, but the Sandman basically does what is done to India, and he does it in return. So
it doesn't help his argument, but at the same time, you understand why he's doing it. I'd have to watch this video in order to be like, oh, you're wrong, you're wrong, you're wrong, you're wrong, to actually get the vibe for it. Like at the end of my first video of watching a Sandman, I understood that he was basically being a troll at the very end. But it took me to the very end of the movie, very end of my reaction to realize, oh, he's just trolling. He's just trolling the entire time. Because it was making me angry, but I was also agreeing with him half the time. It was kind of weird. सभी एब्राहमिक रिलीजन्स पर वीडियो है और उसमें काफ़ी बड़े बड़े क्लेम्स हैं। अच्छा, एक फाइनल एग्जांपल एनवायरनमेंट का ले लेते हैं। ये भी उन टॉपिक्स में से जो मैं कवर करता हूँ। जैसे ही धरती को बचाने की बात होती है, सबसे पहला ख्याल आपके मन में क्या आता होगा? पेड़ लगा दो, राइट? पर सच ये है कि पेड़ लगाना आज की तारीख में पृथ्वी बचाने का सोल्यूशन नहीं है। उसका प्रभाव इतना कम है कि उसको वो इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जानी चाहिए जो हम देते हैं। शहरी इलाकों में पेड़ लगाने की इम्पोर्टेंस है, उससे गर्मी कम होती है, पर लाख करोड़ पेड़ लगा करके पृथ्वी बचाने का जो हमारा सपना है वो सच नहीं है। पर क्या ये बात, ये फैक्चुअल इनसाइट हमें हमारे एजुकेशनल क्रिएटर्स से मिल रही है? नहीं, वो पेड़ लगाने को ही लगातार प्रमोट कर रहे हैं जैसे वो ग्लोबल वार्मिंग की पूरी समस्या का ही समाधान। Plant trees. It'll solve all your problems. No. There's so many things that go into the factor when it comes to like the earth is heating up because of the population, because the ozone, we're putting more toxins. So it's like whether you believe in that or not, I mean that is what's happening. Because back in my mother told me in the 1980s, 1970s, they were talking about how we were going to have a global freeze coming soon. But we kept having more children. We kept having, like, the U.S. is littered with vehicles. Well, I say that, but I've been to India, so the India is littered with vehicles. But I grew up in a household where we had like 4 personal vehicles, 5 personal vehicles at a time. But I guess that's the mistake that you run into when you have 5 sons. You end up with a ton of vehicles. But yeah, it's just like the world is more likely getting. And we have to figure out a way how to cool it down. Do we need to cool it down? Is the world will the world continuously recover? What will be the downside of it overheating? I mean, there's so many things that go into it. लेकिन हमें विश्वास है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बिना जन्म ही नहीं लेता। ये है पेड़, आम के पेड़, और हम आपके साथ मिलकर इस गर्मी के मौसम में 1 लाख पेड़ लगाना चाहते हैं। अगेन, मुझे पेड़ लगाने से कोई दिक्कत नहीं है और सुनने में मेरी बातें अजीब लग सकती हैं। अब मेरे आर्ग्यूमेंट को पूरी रिसर्च वगैरह के साथ समझने के लिए आपको मेरा पूरा See, I think you could easily trace a lot of these videos back to one video. And then all these people saw that one video pop off, that they all started doing the exact same thing, all having the same kind of information. That happens a lot. It happens way too much. Way too much. Where people will just copy paste. That's why I prefer to just react. It's much easier. I get to come home from work, I get to sit down, I get to see something and be like, That's basically my insight here. वीडियो देखना होगा जिसमें मैंने इस बारे में डिटेल में बात की है। ध्यान देने वाली बात है कि मैं एजुकेशनल कंटेंट ना के बराबर देखता हूँ। ये वीडियोस मैंने इसलिए देखे क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इनमें, इन टॉपिक्स में, और उन्हीं में मुझे ऐसी गलतियां देखने को मिली। अब सोचो YouTube पर इंफोटेनमेंट वीडियोस की लाइब्रेरी कितनी ज़्यादा बड़ी है। इन उदाहरणों से मेरा पॉइंट यह है कि जब कोई क्रिएटर हर नए टॉपिक पर वीडियो बना रहा है तो आप उससे बहुत गहराई की उम्मीद नहीं कर सकते। आमतौर पर आपको वही गूगल सर्च करके 3-4 आर्टिकल्स पढ़ के लिखी हुई स्क्रिप्ट मिलेगी। हर टॉपिक पर ऐसा नहीं होता क्योंकि हर क्रिएटर का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में वो क्रिएटर कुछ नया, कुछ इंसाइटफुल या कुछ इंटरेस्टिंग बना सकता है। पर ये जो चीज़ है जनरलाइज्ड कंटेंट की, ये बहुत ज़्यादा होती है। मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी एनिमल्स, एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस से। उसके बाद मैंने थोड़ी सोशल Wait, a bright future of plastic. Smoking is good. Okay. और कल्चरल कमेंट्री ऐड किया। We are lost. A bunch of AI. Again, I probably need to do this AI clickbait as well. I really do. I don't do the bare minimum. Honestly, AI would probably be better because I spend way too much time on my thumbnails just for it to be nothing. But I should probably just utilize AI because they look clickbaity, right? They look clickbaity. पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जियोपॉलिटिक्स, करंट इवेंट्स, रिलीजन, इकोनॉमी, हर चीज़ पे ही वीडियो बना दूं। और यही चीज़ हमारे दूसरे इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं कर सकते ना। वेल, कर सकते हैं,
एक ही यूट्यूबर अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बना सकता है, पर मेरे देखिए उसकी दो बड़ी कंडीशंस हैं जिनकी आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। हर एक टॉपिक पर कंटेंट बनाने की इस होड़ का रिजल्ट ये होता है। But then again, I mean, when you have like a thumbnails are good. Thank you. When you have a video, it really depends on the video because I'm trying to think on what would be a topic. Let's just say America. Let's just say America, and like even like going in and getting Maduro. For that, you can have an easily overly simplified kind of explanation for the whole thing. Like you can. That's normally how I go about it. It's just like, yes, they were sending poison over to the United States. He was pushing the boundaries. They were kept asking him to come to the table. And they went there and we just kidnapped a leader and are putting a figurehead there. I mean, very simple, but there are inner global politics that go involved. You could spend probably a week on a video, like day for day, hours long, explaining how it got to that point. Or you could literally listen to someone speak for 5 minutes on like the bullet points, and it oversimplifies the entire thing. It's good because not everyone wants all the information, but it's also bad because a lot of the key points slip through the cracks as to why things happen. कि जब भी भारत या दुनिया भर में कोई भी घटना घटती है तो हमारे सभी इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स सेम वही कुकी कटर वीडियोस बना देते हैं। कुकी कटर होता है मेटल का एक शेप जिससे आप कुकीज को काटते हो, उससे आप कितनी ही कुकीज काटो सब एक जैसी होंगी। यही बात भारत के इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स के बारे में भी कही जा सकती है काफ़ी हद तक। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ले रहे एक दूसरे से, लगभग सभी मोरलेस एक ही चीज़ बोल रहे होते जब भी कोई नई घटना घटती है। और अभी एक नया शुरू हुआ है। हर साल हमारे सभी इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स आते हैं अप्रैल मई के महीने में और हीट वेव्स, क्लाइमेट चेंज और गर्मी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके चले जाते हैं। नुआंसेस नहीं। So right around the turn of the season, they create more videos about the turn of the season. Of course. Right when it starts to get hotter, it's about global warming. As soon as it starts to get cooler, you change it to something else. I mean, the climate change and all that. Yes, the weather is always it is iffy. It's changed. I mean, heck, last year and the year before, I had more rain here than had come in the past 20 years. Yeah, seasonal content, literally, because people are fearing the stuff that it's like they're gonna click on it. They're going to click on it. And a lot of it, like people's titles are like fear baiting or like just like their thumbnails and things like that. It's all clickbaity. And I don't know why. I may be too old, but it just reminds me of like I started YouTube when YouTube first started. I remember back in the day, like there would be this stupid video, but the thumbnail would basically be a next to naked girl, like basically wearing nothing but like gym clothes. And then you click on it and it's just some dude talking to a camera about nothing. Because it was all clickbait. And a lot of this stuff now reminds me of that. Oh, I checked out the One Piece trailer first thing, freaking loved it. But yeah, it's just like AI is like the new clickbait. It gets people in, it gets people interested. And there's nothing wrong with that, but at the same time, they're because I do enjoy like one content creator who literally just does clickbait titles and clickbait videos, but he's entertaining. He does something that I'm interested in. He basically talks about like the streaming world and like the lolcows of the streaming world. And I'm like, yeah, I enjoy that. I enjoy seeing the people that have been doing this for all their life not literally have a backbone or not really stand for anything. I enjoy that, but it's just like you have to know going into it, and a lot of people click on things and don't. Yes, on stream. चाहिए कि किन जगहों पे सरकार अच्छा परफॉर्म कर रही है, कहाँ बुरा कर रही है, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या पिछली सरकारों ने किया, क्या अभी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सब नहीं। प्रॉब्लम है अंदर सॉल्यूशन है। ये प्रॉब्लम है अंदर सॉल्यूशन है वाला एटीट्यूड बताता है कि हमारे इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स कभी कभार थोड़ा रियलिटी से दूर चले जाते हैं। मुझे ध्रुव राठी के व्हाट इफ आई बिकम इंडियाज प्राइम मिनिस्टर इस वीडियो पर श्वेताब गंगवार का रिएक्शन वीडियो रिकमेंड हुआ था।
मेरे देखे वो 1 घंटे का वीडियो Hey, don't knock the reactionary content. I do a great job here. I'm doing the world a service. I'm doing the world a service here. Oh, but yeah, it is. I do like how he's introducing like the real downsides. Like a lot of the stuff that you intake isn't truly informative. That's why when I watch something, I'm always just like trying to look at it from my own personal life, because I will take in information, but I'm not going to accept all information. If it's close to something I believe in, or that I somewhat understand, I'll be like, this is how I can compare it to what I understand from the beginning. But it's not always the case. Not everyone can be the same. LOL, even you ain't safe. No, I'm definitely not safe. I do like the laziest sort of content. Absolutely. However, it's all I really have time for with work and everything, but it's I do what I gotta do. क्रिटिकल थिंकिंग में एक मास्टर क्लास है। श्वेता, आप खुद कोई एक्सपर्ट नहीं है उन अलग अलग फील्ड्स में जिनकी वीडियो में बात हुई है, लेकिन बस थोड़ी सी ही क्रिटिकल थिंकिंग से पता चलता है कि ध्रुव के हर सॉल्यूशन में कितने वेरिएबल्स और कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जिन्हें ध्रुव ने अपने ओरिजिनल वीडियो में बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया था। 80 वेरिएबल्स जब वो गिनाएंगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो तुम अभी जो इमेजिन गाने में हम जो खेल गए हैं कि इसको तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बट ये वैसी सोल्यूशन है जैसे कि हम 5 लोग चाय पी रहे हैं और हम चाय में तू प्राइम मिनिस्टर बन जा, तू फाइनेंस मिनिस्टर बन जा, तू ये बन जा, तू होम तेरे पास मिनिस्ट्री है, तू कैसे सॉल्व। और हमने उस दिन 1 घंटे में पूरे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी, बट वो चाय पी रहे थे ना, रियलिटी में तो नहीं हुआ ना। इस सब का रिजल्ट ये होता है कि भारत की यूट्यूब ऑडियंस वही ओवर सिंप्लीफाइड कुकी कटर वीडियोस देखती है। नए पर्सपेक्टिव्स, एक्चुअल उस फील्ड के एक्सपर्ट्स और नुआंस्ड बातों के लिए जगह कम बचती है। गलत मत समझना, ऑब्वियसली अगर कोई घटना हुई है तो उसकी बेसिक एक्सप्लेनेशन की हमें ज़रूरत है। और इस देश में जब तक बड़े लेवल पर पब्लिक आउटरीच नहीं होता, ट्विटर पे 3-4 कैंपेन्स नहीं चले जाते, कोई घटना वायरल नहीं हो जाती, तब तक उसको हमारी सरकारें भी उतना सीरियसली नहीं लेती हैं। तो वहाँ पर इन्फोटेनमेंट I kind of get it. Like the point, like you do have to build an outrage. You do have to, but yes, bringing it down sometimes. Like I guess that's what I was saying, where I would basically bring things from my perspective. I'd watch something, I'd see what I could get out of it, and then put something back, or just try to understand it from my perspective. Like I was doing that the other day with like the 18-day war. And how they were trying to say, oh, it's real, and I'm just like, well, the Iliad turned out to be real, so why couldn't that mythology turn out to be real? And it's just the same kind of concept. I go into the world thinking that there's always a possibility. History is history, but yet we do not know entirely what happened, especially when it comes to years and years ago. Heck, even like 20 years ago is still too far for us to truly know everything that happened. Now that we're getting into the digital age and everything is documented and everything is recorded, it's becoming much easier to track down and figure things out. But we will never truly know because we aren't God. We all have our own biases, we all have our own perspectives, and we all can choose for ourselves what to actually follow, what to actually believe. क्रिएटर्स का एक रोल हो सकता है उस मुद्दे को एम्पलीफाई करने में, बड़ा बनाने में। उन स्पेसिफिक केसेस में शायद इन कुकी कटर वीडियोस की भी जगह हो सकती है। सच कहूँ तो इस बारे में मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है। That's rude. First of all, come to and touch some ground in India. Honestly, I probably have a better chance of becoming prime minister at that point. I've been there 5 times. I've touched the ground. Well, I guess 5 times. I've been in India 5 times. I have a shot for becoming prime minister. I'm not exactly sure. आप अपना ओपिनियन दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरे देखे एक ही इन्फ्लुएंसर कई टॉपिक्स पर। You still think digital archiving is not enough, but that's still your thoughts? Yeah. I mean, that's the thing. It'll never truly be until we literally, every person, every human being, which will never happen, has something implanted in their head which tracks their thoughts, which tracks their movements, which tracks their intents, which tracks every single aspect. We will never know 100% what exactly is going on in the world. That's just fact.
That's just fact. It sounds kind of I don't think it's nihilistic, but I guess more pessimistic. But that is more of the reality of it, because yes, we can somewhat get a feeling for what people think, for what they do, for how they act. But that's not like why people say, do not judge someone by what they say, judge them by what they do. That there are always ways to kind of understand who someone is. But at the same time, we will never truly know that person unless we are that person. And none of us are God, so we can't make that decision for people. But I still find that it's still a better way to judge, especially now that most people don't have filters. They don't seem to truly understand much. Oh. पर भी वीडियोस बना सकता है। उसकी कंडीशन ये है कि पहला तो प्रेजेंटेशन का स्टाइल एक्सप्लोर करने वाला हो, ऑडियंस को पता चल जाए कि आप भी उस टॉपिक को एक्सप्लोर ही करके वीडियो बना रहे हो। आमतौर पर हमारे इंफोटेनमेंट यूट्यूबर्स का बोलने का तरीका ही ये नहीं होता कि हम उस टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं या इस पर भी मैं अपनी कमेंट्री दे रहा हूँ। बोलने का तरीका ही एक्सपर्ट वाला होता है। मुझे पता है और अब मैं तुम्हें बताऊंगा, फुल कॉन्फिडेंस। और दूसरी कंडीशन, एक्चुअल फील्ड एक्सपर्ट्स को इन्वाइट करना, उनसे बात करना, उन्हें अपने वीडियोस में फीचर करना, उनकी कही बातों पर आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना। वो चीज़ होती है जब आप 10 अलग अलग टॉपिक्स पर भी वीडियोस बना सकते हो। जैसे वॉक्स एक अमेरिकन न्यूज़ वेबसाइट है जिनका 1 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ एक यूट्यूब चैनल है। चैनल पर वो पॉलिटिक्स, पॉलिसी, कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी और भी दूसरे टॉपिक्स कवर करता है। उनके लगभग हर वीडियो में आपको कोई ना कोई स्पेशलिस्ट मिल ही जाएगा। Yeah, but again, the specialists that they have, like every news organization all has the same problem. They're human that are operating it. Take that for what you will. It's humans that are operating it. And humans, we all have biases. We all have preferences. We all have things that we view as right, things that we view as wrong. We all do. We all do, and no one sees eye to eye. I always say that. Nobody will see eye to eye. No one's 100% exactly the same copy as someone else. Even throughout time, it hasn't been the case. You can get similar types of people, similar types of ways they choose to live their life, but it's Vox is hella biased. Yes, exactly. Because they hire people that can push their narrative or that think the same thought. Again, just like with Fox News or CNN or even Newsmax or crap, I'm trying to think, the Times. Every single one is biased and has their own. Even if you end up hiring a ton of people with different mindsets, each person all has their own bias. So in the end, you're going to end up with a sludge of information. That's why a lot of people have gotten away from like regular news sites, because normally it's easier to trust someone who just wears their how they are on their sleeves instead of hiding behind a computer screen and typing everything up and trying to force everyone to believe something that they've typed up. When you actually listen to them for the first time ever, they're just absolutely insane. Like, I'll never say I'm sane, but at least everyone, you guys all know, I admit to not being sane. Yeah, I mean, that's just how it is. That's just how it is. Hey, do you wonder how all the cancer cures are suddenly popping up in the past week? Cancer cures? I did not hear anything about that. लॉयर होगा, कभी कोई एक्टिविस्ट, कोई रिसर्चर, न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह वगैरह। और ऐसा नहीं है कि वॉक्स कोई बहुत बड़ी न्यूज़ वेबसाइट है तो उनके पास रिसोर्सेज हैं ये सब करने के। मेरे देखे बात रिसोर्सेज की कम और नीयत की ज़्यादा है। 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल पे, लेकिन कई एक्सप्लेनेटरी वीडियोस में आपको एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जिन्हें उस मुद्दे के बारे में आपसे और मुझसे कहीं ज़्यादा पता है। तो जिन लोगों ने इंफोटेनमेंट की फील्ड को डोमिनेट कर रखा है, उनके पास भी पर्याप्त रिसोर्सेज हैं ये चीज़ करने के। लेकिन हमारे इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स शायद उस बात को चुपचाप स्वीकार करते दिखाई नहीं देते कि भाई हम एक्सपर्ट नहीं हैं और इसलिए हम इस फलाने एक्सपर्ट या ग्राउंड रियलिटी जिस व्यक्ति को पता है उस पर भरोसा करेंगे, या कम से कम उस व्यक्ति की रिसर्च का, उसकी फाइंडिंग्स का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ हो सकता है आप ये कहो कि भाई एक्सपर्ट्स को बुलाने के लिए ही तो पॉडकास्ट होते हैं, पॉडकास्ट में 1 घंटे तक वो एक्सपर्ट ही तो बात करता है। एक्चुअली पॉडकास्ट की एजुकेशनल वैल्यू मैं नहीं कहूँगा बुरी है, पर वो एक बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है। कोई न्यूट्रिशनिस्ट आकर के कुछ भी क्लेम्स कर सकता है घंटे भर में, आपने सुना ही होगा, आपको पता ही है। और चूंकि होस्ट बुरा नहीं बनना चाहता, इसलिए वो उनके व्यूज़ को चैलेंज भी नहीं करता। और सच ये है कि अधिकतर जो बकवास हमें देखने को मिलती है ना पॉडकास्ट में, उसे चैलेंज करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए उस टॉपिक पे, बस थोड़ी बहुत क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। एनीवेज, वापस आते हैं वीडियो क्रिएटर्स पे।
ऑडियंस को ये जानने का हक है कि आप बस एक यूट्यूब He keeps baiting me with that'll be a video for another day. Because he gets into an interesting topic and then he's like, well, that's a video for another day. That's the second time he's done that. I think the first time he said it was like, oh, that'll be in the next video. And now he's saying it's a video for another day. हूँ। मैं खुद भी उसी कैटेगरी में आता हूँ। आपने सालों तक उस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं की है और आमतौर पर ना ही आपकी टीम में वो मेंबर्स हैं जिन्होंने उस सब्जेक्ट की सालों तक पढ़ाई की है। भारत की इंफोटेनमेंट फील्ड को भयानक जरूरत है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी की। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का अर्थ होता है अपने ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करना। आपको एक्चुअल में See, that's why I like to say I'm a retard. That's why I like to say it. Like, I'm absolutely insane. I have my own perspective, and I know I do. I know I do. And I know not everyone will agree with me. That's the thing. I'm perfectly fine with that. I am perfectly fine with that. And you guys are all watching a retard right here. How do you feel? How do you feel? But that's the thing. It's like, what's the there's a line for it. The he who knows everything knows nothing, and who knows nothing knows everything. Because I know nothing, and I'm always eager to learn more. Yes, there are my things that I absolutely believe in wholeheartedly, but at the same time, that doesn't mean I'm refusing to learn anything else. Definitely. But everyone should be of that mindset where they're eager to learn more, even if it's not something they completely agree in. You want to hear another perspective. You want to hear another perspective. Bro, a video, if made with too much details, then it will be a podcast. If 3 hours or more, just my explanation and connecting dots. Yeah, basically. That is the case. And a lot of people's attention span can't last for that. Can't last for that. बहुत ही कम चीजें पता है और आप गलत हो सकते हो। जब व्यक्ति ये करता है तो एक विनम्र It's funny, I'm saying all that, and here you are just talking to me, or listening to me just talk on random nonsense. You all have the patience for it. You all have the patience for it. अपने आप आ जाती है। उसके स्टेटमेंट्स इतने एब्सोल्यूट नहीं होते कि ऐसा ही है। वो जगह रखता है नुआंसेस की, प्रोबेबिलिटीज में ज्यादा बात करता है कि इस चीज में ऐसा होने की संभावना ज्यादा है, बजाय इसके कि ऐसा ही है और ऐसा ही होता है, जो कि हमें YouTube Average people are smooth-brained. I hate to say I agree with you, but at the same time, with the overabundance and the explosion of like shorts and TikTok and like Instagram Reels and like all those short form content, it's easy to see how people, they get their dopamine so quickly that they have to continue scrolling. I'm so lucky that I was too sick during the Vines. I never understood how to operate Snapchat. I avoided a lot of this stuff. And for me, social media is still one of those things. Like, I loved YouTube. When YouTube first started, I created a page and I was making AMVs in the beginning. That's just how it was. That's just how it was. I loved doing it. And because I love creating content. I loved anime. I love, well, I didn't really love music, but I was like, I liked mixing music or anime fight scenes to the beat of music. That's what I enjoyed. And that's basically what I do. That's how I started. And I've just been doing stuff ever since. I love the long form. I've always preferred the long form. Now, I basically do reactions to the long form. Upgrade! पर बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है हमारे इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स से। तो मेरे देखिए इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी के साथ किया गया डाइवर्सिफिकेशन काम का है। वो नए इंसाइट्स दे सकता है। ये चीज़ हमें इंटरनेशनल क्रिएटर्स में देखने को मिल भी जाती है, जैसे जॉनी हैरिस। I commit to you that I'm going to stick to rock solid facts here. I'm going to lay them out the best I can and show. I always take issue when someone says they're gonna the stick to facts, because eventually your biases seep through. Eventually your biases seep through. That's the problem. That's the problem. Is like everyone will start looking for things that explain their narrative instead of looking for the narrative itself. Like I mentioned this on one of the other videos I was checking out, because it becomes difficult. It becomes difficult. Everyone has a bias. Everyone has a bias. It's sad. It's sad, but it's true. It's true. Understand real world things takes time. Yeah. And this TikTok gen will never understand it and will be living a living puppet. Yeah, basically. And honestly, that's what governments want, right? They want someone to just say yes, 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 yes. Show you the evidence that clearly demonstrates how we know these facts. Whenever I'm making circumstantial connections or my own analysis, I will try to make that very clear. पर भारत के सीन में हमें देखने को मिल रही है कल्ट फॉलोइंग। मेरे फेवरेट यूट्यूबर ने वीडियो बनाकर ऐसा बोल दिया, मतलब बोल दिया।
तू होता कौन है उनके खिलाफ कुछ बोलने वाला? पता है कि सबको ऐसा होता है, और कई बार इस कल्ट फॉलोइंग से थोड़ा सा मेन कैरेक्टर सिंड्रोम भी डेवलप हो सकता है। ये चीज ह्यूमिलिटी, जिसकी चर्चा हमने की, और अकाउंटेबिलिटी, जिसकी हम अब बात करेंगे, इन दोनों के खिलाफ है। Yeah, the cult-like mindset where they'll defend someone no matter what, even when they're proven to be absolutely wrong, or even when they contradict them. Like that's one of the problem with like some communities. Like again, I'll talk about like the Hassan Piker. He has contradicted himself like all the time, but his community is rabid and will try to demonetize and deplatform and throw anyone off the internet that has said anything negative towards them. It's insane. It's insane. Even when everything he says is hypocritical to something he like said the day prior. Oh, the supporters for the Druv are like that. I can believe it. I can believe it. Because that's the thing. It's like people build communities like that. Because you need to welcome discussion. You need to welcome arguments. You need to welcome those types of things. You can't have someone who just constantly berates, builds a cult-like mindset. Levi, can you answer some questions of your national issues going on, or it will affect job? In India, no official government worker can commit to government or anything because they can lose their job. What? Oh, can comment on government or anything. I don't really have that issue. I don't really have that issue. If I'm honest. I mean, maybe there are some things I can't speak on, but not that I know of. Not that I know of. Why I don't get your live notifications? Because you haven't rung the bell yet. You haven't rung the bell. Mostly this young people and school college going students. Oh, that's the one he emulates for a cult. Basically, those are the ones that are targeted for like cult-like mindsets. थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ऑडियंस को ये जानने का हक है कि आप एक यूट्यूबर हो, तो फिर आप एक क्रिएटर के तौर पे अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे एस्टैब्लिश करोगे? कैसे ये लोगों को बताओगे कि आप जो बोल रहे हो वो एक्चुअल में बात ठीक है? उसका सीधा सा जवाब है अपनी कही गई हर एक बात का प्रमाण देना, इस तरीके से कि जो भी व्यक्ति उसको पढ़ना चाहे, उसकी जांच पड़ताल करना चाहे, वो बहुत आसानी से कर सके। ऑडियंस को हक है ये जानने का कि आपके वीडियोस के सोर्सेज क्या है, और यहाँ पर मुझे लगता है बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए नीतीश राजपूत को। उन्होंने पहली बात तो खुद को इस कुकी कटर वीडियोस की भीड़ से अलग किया है, और उनके Yep. He does like a lot of his videos are really informative, like all the little details. स्पेशलिटी बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ रिसर्च और ट्रांसपेरेंसी। मुझे नहीं पता किसी ने देखा या नहीं, पर नीतीश के सोर्सेज की लिस्ट इतनी ज्यादा प्रॉपर और डिटेल्ड है। Holy crap! So he actually cites all his information. That's great. That's absolutely great. That is exactly how it needs to be done. There has to be a record for everything. Just the fact that he's citing it, because that's the thing, maybe there will be something in the sites that is biased, but he's getting enough kind of information from various sources where you're more likely to accept his word for things. Yeah, you do. Like for me, it's just like a lot of the stuff I know is from like personal experiences. Like how I feel about ICE is due to my own personal growing up and personal and you know, all that. Dev's Talk with Adi is also a channel like that. Okay. Yeah, it's just that's the thing. It's just like I do have my own reasoning for things, but again, a lot of mine is just personal, which is why I'll speak on the fact that it's personal. It's because that's the way it is. But when you have knowledge in actual researched articles, it makes sense that you have more understanding. But let's be honest, how many people will actually look through all the sites and check everything out? Oh my gosh. Is Soft Brainwasher, he literally tried to brainwash. I can't pronounce that other name, but oh well. So can we discuss about the Ro Khan and Bondi Hiri latest at finding the more deeper social media trends going on in real-time geopolitics? I don't know about that. The last thing I heard about was the lady who was brought before Congress explaining as to why someone was redacted from the information when everyone knew he was on the information for the files, and it just didn't get put out.
हर एक सेंटेंस का पता होता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ से आया है। ये है रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल। ये होता है एक स्टैंडर्ड सेट करना। कितने बड़े लेवल पर इससे एक विश्वास पैदा होता है कि अगर बंदे ने कोई गलती की भी है तो आप जाकर के देख सकते हो, कोई भी जाकर के देख सकता है कि वो गलती कहाँ से आई है। अगर वो एक्सपर्ट नहीं भी है तो भी कम से कम वो इस बात को लेकर ओपन तो है कि भाई मैंने ये जानकारी यहाँ से उठाई है। दूसरी ओर आप उदाहरण के लिए गौरव ठाकुर का कोई वीडियो देखिए। गौरव ठाकुर साइंस यूट्यूबर हैं, साइंस यूट्यूबर। मैंने उनके 10 लेटेस्ट वीडियोस चेक किए, मुझे किसी भी वीडियो में एक भी सोर्स की लिंक नहीं मिली। बस जो बोल दिया वो बोल दिया। किसने बोला, कहाँ? Oh, it's just the explanation as to what he's doing, and follow me on. Yeah, just a demon. Yeah, I guess. And they try to credit themselves as someone they're not. That the same thing happened with the Canadian Indian YouTuber Mudahar, where he kept saying he was a software engineer or something like that, or computer science or something like that, consistently, only to find out for the years he was on YouTube saying that stuff, he had never once actually gotten a degree in that stuff. He just said it for some reason. He said it for some reason because apparently it built a career for him. But you again, for a YouTuber, what does your degree matter? What does your degree matter? But when you're actually doing like informational videos, you need to have a site and references, or if you're interviewing someone, you need to have the interviews before you. It's going insane, as I had thought I would, but as many things are happening in US, Bill Gates is trying to clean his image, of course, by donating an summit. Yeah, again, I like I said, a lot of the philanthropy that people do is normally to negate the cost of guilt. That's normally how it is. A lot of people who do something bad will, one, try to push someone else to do something bad. And I've used personal references as that. Like when someone drinks and they see someone around them who's not drinking and they are underage, they want to get the other person underage to start drinking too, so that way they don't feel bad for doing something wrong. And then just like when you know you're doing something wrong, you also want to negate it by doing something to make you feel good about it. Oh, I'm not an evil person. I donate all this stuff. So it's there's nothing wrong with donating to charities. That there really isn't. But it's always iffy when someone's donating a ton of their net worth to charities. से आई बात नहीं पता, और ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि उनके वेज वर्सेस नॉन वेज वाले वीडियो पर रिस्पॉन्ड करने में मेरे पसीने छूट गए थे। वेज वर्सेस नॉन वेज, जैसा मैंने कहा, इस वीडियो में मैं किसी भी क्रिएटर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अधिकतर इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स अपने वीडियोस में कोई सोर्सेस शेयर नहीं करते हैं, इंक्लूडिंग पॉपुलर क्रिएटर्स लाइक ध्रुव राठी एंड अभिमन्यु। अगर आपको ये क्रिएटर्स पसंद भी हैं तो भी आप खुद से सोचो कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आएगी। पता ही कैसे चलेगा कि कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ। जिन क्रिएटर्स का मुझे पता है कि उनके वीडियोस में सोर्सेज मेंशन होते हैं वो हैं ओपन लेटर, मोहक मंगल। मोहक के भी सोर्सेज वैसे काफ़ी प्रॉपर होते हैं। उसके अलावा नीतीश राजपूत और मैं। इनफैक्ट मैं अपने yeah, like do a genocide and wash sins by doing a charity. Yeah, basically you feel good for yourself because all these children were eaten, but at least I donated to child cancer. That kind of stuff. वीडियोस में कोशिश करता हूं कि कोई थ्योरी या कोड या एक्सप्लेनेशन अगर सीधा किसी भी न्यूज़ आर्टिकल या स्टडी से आ रहा है तो उसकी प्रॉपर डिटेल्स अपने वीडियो में भी डालूं, ताकि व्यक्ति जब उन सोर्सेज का डॉक्यूमेंट खोले तो उसे भटकना ना पड़े। वही बात है एक स्टैंडर्ड सेट करने की। अभी तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। बहुत फैंसी एडिटिंग तो हमें देखने को मिल जाती है, जो कि बाय द वे मुझे पसंद है फैंसी एडिटिंग, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पर जो बात बोली है वो कहाँ से उठाई है यही नहीं देखने को मिलता। और अगर कोई कहता है कि यार वीडियोज़ में आर्टिकल्स की हेडलाइंस और हाईलाइट्स वगैरह होते तो हैं, तो वो एडिटिंग के अंतर्गत आता है। रेफरेंसेस ऐसे नहीं दिए जाते कि 1 सेकंड को स्क्रीन पर दिखा दिया और जिसको पढ़ना है जाके सर्च कर लो और पढ़ लो। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, और इसका सोल्यूशन एक्चुअल में बहुत ही सिंपल है और उसके लिए आपको मजा कर रहा हूँ। I was like, wait a minute. Didn't he just say that there is no real, like people saying, oh, there's a quick solution. I was like, wait, what? So I was like, okay, it's just a joke. नहीं लगता इसका कोई सोल्यूशन है। क्रिएटर्स के पास देखो बदलने का कोई इंसेंटिव ही नहीं है। वीडियोस बन रहे हैं, पैसा आ रहा है, क्यों बदले? क्यों स्टैंडर्ड उठा? That's why I say like people that make like hate content on India is primarily for the money. Like people will hate watch something just because it's so rude. Like there's a market for it. I mean, heck, I could probably make a video that's absolutely spiteful towards India, and I could probably make a lot of money to last the rest of the year off that spiteful video. Sure, there would be a lot of lies, but that's the thing. Most of the world, most of the U.S. has no clue about it, so some U.S. people would be influenced by it, and I would be
Oh crap. No. And I would be a better voice for most people to listen to because I had been there 5 times. It's just ridiculous. It's ridiculous. Yeah, but yeah, a lot of it has to do with money. A lot of it has to do with money. हालांकि कायदे से उन्हें इस चीज़ को फिक्स करना चाहिए। शायद यही हो सकता है कि ऑडियंस थोड़ी अपने आप को इस बारे में एजुकेट करे, सोर्सेज जाकर मांगे कि भाई कहाँ से लाए हो ये बात। मुझे तो मेरे चैनल पर रेगुलर कमेंट्स आती रहती हैं कि रिसर्च के लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूं और उन्हें बताना पड़ता है कि पहले से ही एडेड हैं। तो मुझे नहीं पता कि लोग इन क्रिएटर्स से डिमांड नहीं कर रहे हैं, वही जो एक तरफ कल्ट फॉलोइंग हमें देखने को मिलती है, या फिर लोग डिमांड कर रहे हैं पर क्रिएटर्स उसको इग्नोर कर रहे हैं। पता नहीं। एक दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ऑडियंस उस तरीके के क्रिएटर्स को ज़्यादा महत्व दे जो उस लेवल की ट्रांसपेरेंसी और उस लेवल की मेहनत अपने वीडियोस में दिखा रहे हैं। इस बारे में अगर आपके पास में कोई विचार है कि क्या हो सकता है, क्या आपको लगता है, तो प्लीज़ उन्हें कमेंट्स में शेयर जरूर कीजिएगा। ये बात हुई इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स की, इनके बारे में मुझे इतना ही कहना था। इसके अलावा भी एक्चुअली बहुत तरीके के इन्फ्लुएंसर्स इंटरनेट पर उपलब्ध हैं जो एक्चुअल में लोगों को एक्टिवली नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी ऑडियंस को। फैशन इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स वगैरह वगैरह। अब कैसे ये लोग अपनी एक फेक लाइफ दुनिया के सामने दिखा रहे हैं और वो रियलिटी से कितनी ज्यादा दूर है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा ये वीडियो। Honestly, yeah, that's right. Freaking influencers. I hate that. I freaking hate that. But it's just ridiculous. Whoever shows the true truth, their channel will get deleted by YouTube. Like string so no one can is centrist in YouTube. Basically, it's hard to be centrist in YouTube because YouTube doesn't really accept things like that. But at the same time, it also definitely accepts that. But there are other platforms, but none of them are really successful. So it's a lose-lose situation. It really is. And that's the thing. It's just like people will create content. People will create videos that just people, again, it's all this clickbait. It's all this misleading information. It's just giving someone and telling someone what they want to hear. Like I've seen it a lot, especially with like foreign people reacting to like trailers from India. Like the just look at like the toxic one, for instance. I gave my honest thoughts on that, but or the teaser, the announcement teaser, whatever it was. But you see all these foreigners just doing weird, stupid faces. Why? Because they know they're going to get money for it. They know they're going to get a fan base for it, and it's sad. It's sad that the people will lie to themselves, pretend to be somebody they're not, or say something just to get views, just to get views. It's better to be honest and forthright about everything. You guys got a video? So bad. And don't forget to like and subscribe. Where's that?